Hello, good evening, good evening. Just a minute. Just a minute, I'm checking the camera and all. Hmm. Am I audible? Everything fine? My screen and everything? Okay, so I'll start the session. I hope everyone has given the mock test. So first of all, sorry for the late starting of the session. I am just got caught up in some work. Okay, so I hope everyone has given the mock test and is ready for the discussion. So we have a lot of questions to cover in a limited amount of time. So I might not be able to wait for you guys to answer because since you have already given the test. Okay, but if anyone has any doubt, please do not hesitate to post it in the comment section and I'll be happy to answer it. Okay, so beginning with the first question. Okay, so first of all, your NEET exams and INI exams dates are out. Both of them are scheduled in the month of May. Okay, so it's a good thing as well. Okay, since you don't have to study and wait for the next exams to come, you can complete them in one go in 1 month. And next, the most common question which students ask me is that is the course different or do we have to study something different for the second exam? So I'll be very clear with you. Okay, NEET and INI both test your knowledge on dental subject. Both are for entrance for your MDS dental postgraduate program. Okay, it's not like INI is going to ask you some certain different subjects and NEET certain different. Both involves same kind of preparation, same subjects, so you don't have to study anything different. It's just that in INI you have a certain analytical based question or case based scenario questions which are present, which are not there in the NEET exams. Okay, NEET is generally direct based questions, less of theoretic, less of clinical scenarios in NEET exam. Okay, so the thing is today our predictor series, my predictor series is not focused on only one exam, hence I've named it as for NEET and INI CET 4. It will carry a mix of both direct questions as well, those who have attempted the questions, and certain clinical based scenarios as well. Okay, so without wasting further time, we'll start with the questions. So which of the following statement is
correct regarding the size of the face at birth and adulthood. So the question is asking you about a correct statement. The face forms 2/3 of the bulk of head, whereas in adult it forms 1/3. Face forms half of the bulk of the head throughout life. Face forms 1/3 of the bulk, whereas in adult it forms 1/8 of the bulk. And last, the face forms 1/8 of the bulk of head, whereas in adult it forms 1/3 to half of the bulk. Okay, so the question is related to cephalocaudal gradient of growth. Okay, in which, what does it say? It says that the cephalic part grows first and the caudal part, that is a trunk and the leg, grows later. Okay, so the correct answer here is the face forms 1/8 of the bulk of the head, whereas in adult it forms 1/3 to half of the bulk of the head. Okay, so this is a diagram. इस डायग्राम से बेस्ड न्यूमेरिकल डेटा है विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर नोट्स, वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन. So at 2 months fetus it is 75% to 50% and so on. The head size does not decrease. The caudal or the trunk portion grows more as the patient or the child reaches adulthood. Okay, so important is this diagram and the numerical data. Third thing which is important is the clinical based scenario. So what clinical based question can come from this is, since cephalocaudal means the part nearer to the head grows first and the part away from it grows later. So maxilla being nearer to the head grows first and the mandible which is away from the head grows later. So अगर कोई functional modification करना है, means growth modification, so अगर कोई growth modification appliance देना है तो means you have to correct the maxilla first and then the mandible. And maxilla में कौन सा first means face mask therapy for skeletal class 3 correction first. एज वाइज, फर्स्ट मीन्स एज वाइज, इसको फर्स्ट मत समझना मतलब पहले ये करना है वो करना है. अगर एज बेस्ड क्वेश्चन आए कि अ चाइल्ड रिपोर्ट्स टू योर क्लिनिक, सपोज लिया 6 ईयर 7 ईयर और 8 ईयर, अगर मैं ब्रॉडली लूँ 7 to 9.5 या 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड आता है तो उसमें आप ट्विन ब्लॉक थेरेपी स्टार्ट नहीं करोगे. यू कैन डिले इट टिल 10 or 10 to 12 years of age, between 10 when pubertal growth spurt. Whereas face mask therapy for class 3 correction means maxilla को बाहर, so that correction needs to be done before 7 years of age, needs to be started before 7 years of age. So this is the clinical application of this cephalocaudal gradient of growth. Okay, so this clinical application or this kind of question came in your NEET 2024 exam. Okay, moving ahead. Marked anterior mandible growth rotation. So this is question based on growth rotation. Okay, so occurs when growth in posterior height is less than anterior facial height. Okay, is often associated with deep overbite. मुझे वो पता करना है. Is often associated with deep overbite, is associated with an increased maxillary mandibular plane angle, is associated with a concave lower mandibular bottom. Okay, so the correct answer here is deep overbite. So ग्रोथ रोटेशन वाले क्वेश्चंस में आई हैव जनरली टोल्ड यू गाइस डायग्राम ड्रॉ करके समझो. रफ डायग्राम, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप पूरा पेन पेपर लेके ड्रॉ करो जब आप व्हेन यू आर स्टडिंग दैट, बट नॉट एट द टाइम. ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे यू डोंट हैव अ पेन और पेपर टू ड्रॉ. ओके, सो टू अंडरस्टैंड व्हाइल यू आर रिवाइजिंग योर नोट्स ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम.
That's the way I taught in the class as well. That's the way you are able to understand. If you are able to visualize it, very well, but once you draw the diagram, you'll be able to do it properly. Okay, so marked anterior mandibular growth rotation. This is a mandible anterior growth rotation. Okay, so अगर हम first statement है, occurs when growth in posterior facial height is less than anterior. Okay, this is posterior facial height, this is anterior facial height. So इसका मतलब ये तो posterior growth rotation हो जाएगा. So that is eliminated. Associated with increased maxillary mandibular plane angle. No, it is associated with decrease. So this is also eliminated. Is associated with concave lower no, this is associated with convex lower mandible. So correct is associated with the overbite. Next question. Anteguinal notch is prominent when mandibular growth is forward and upward, forward and downward, downward and backward. Anteguinal notching prominent in all types of mandibular growth pattern. Again, a growth rotation question. We'll draw a diagram. What is anteguinal notch? It is visualized generally on a orthopantomogram or a panorex or a OPG. Okay, it is present on the lower border of the mandible here. Okay, so it's prominent when the mandible जब आगे का the anterior part grows down, posterior goes down. So the mandible grows in downward and upward direction. This means the anteguinal notch is prominent. Hence option C is correct. Next question. The initial sign of sexual maturation in boys usually is the. So it's a direct theoretical question, nothing much to explain in this question. Correct answer is in boys usually it is fat spurt, change in voice, growth of pubic hair, or all of them. So it is asking initial or first sign. First sign is I think fat spurt. Yes, fat spurt. So this is the table. It is very important for your exam, both girls and boys. First thing important, girls may they are divided into 3 stages, boys may 4 stages. Okay, next important thing from this table is peak velocity in height. Sorry, this peak height velocity or peak velocity in height. Okay, so peak velocity in height अगर किसी में हो आ गई means pubertal growth spurt आ गया. अगर pubertal growth spurt आ गया है तो means functional appliance therapy you cannot start. Removable functional appliance therapy like twin block, activator, biometer. अगर फंक्शनल अप्लायंस थेरेपी और मोर स्पेसिफिकली ट्विन ब्लॉक या कुछ स्टार्ट करना है, द चाइल्ड शुड बी बिफोर दिस स्टेज, बिफोर स्टेज 2 इन गर्ल्स एंड बिफोर स्टेज 3 इन बॉयज. Okay, so onset of menstruation, onset of peak velocity in height means growth spurt start हो चुका है, आप late है. In that case, so what will be the treatment mechanics? Then you can have to go for fixed functional appliance therapy. Okay, I hope I am clear with this clinical application part of this. Theoretically आपको stages पता होनी चाहिए, which stage, which age. Clinical application is this. Any doubts, please ask. Next question. Primary cartilage seen in the head and face is identical to the growth plate cartilage of the long bones. They have the capacity to grow from within and are pressure tolerant, non-calcified, flexible, non-vascular, and do not have nutrient membrane covering. Which of the following statement is not correct as far as role of primary cartilage during growth in human is concerned?
Students, there is a one general observation which I have found. Now you guys have a time bound scenario, means you have to complete one section in certain time period. Whenever students faces such kind of a question जिसमें the question paragraph is too big, it occupies the whole screen, half of your mental level is down कि इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें टाइम वेस्ट होना. मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ एंड दिस इज वैलिड इन एवरी सच काइंड ऑफ सिनेरियो क्वेश्चंस, केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चंस, वन बिग पैराग्राफ विद इमेज. इट इज 100% वैलिड दैट दीज क्वेश्चंस आर द सिंपलेस्ट टू आंसर. अब इसमें जो पहली 3 लाइन है इसका कोई सेंस नहीं है, दे आर जस्ट गिवन टू वेस्ट योर टाइम. The only line which is sensible or important is this one. Which of the following statement is not correct as far as role of primary cartilage during growth in human being is concerned? पहली 3 लाइन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं, बट वो आपको एग्जाम में पढ़े बिना तो पता नहीं चलेगा. हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स और माइंड लेवल गोज ब्लैंक कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका तो पढ़ते पढ़ते ही हमारे 5 मिनट लग जाने हैं. विल बी एंड वो टाइप साइड में अपर लेफ्ट कॉर्नर में टाइम चल रहा था. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में पैनिक नहीं करना है. जो मेन क्रक्स मैं बोलना चाहूँगा, यू हैव टू बी काम एंड विद अ कूल माइंड. उसका आंसर उसी में छुपा होगा एंड दैट इज 100% ट्रू. ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज फार एज रोल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेज ड्यूरिंग ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न? It first appears in head during the 5th week prenatally. The overall influence of primary cartilage on craniofacial growth is most profound in late life. By mid-childhood, most primary cartilage is replaced by bone through endochondral bone formation. By birth, primary cartilage comprises a substantial portion of the nasal septum and cranial base. Okay, the correct answer is option B. That is, overall influence of primary cartilage is most profound in late life. No, it is most profound in early or life, or you can say embryonic life, क्योंकि प्राइमरी कार्टिलेज का जेनेटिक रोल होता है. ओके, सेकेंडरी कार्टिलेज इज derived from primary and which comes on later in life. So this is the differentiating table between primary and secondary. It's available in your explanation section. I won't be discussing this right now. Moving to the next question, again a very big statement question. Okay, so observation, study and study of growth pattern during development of human being is one of the very basic aspects of growth studies. Study of growth in height is one of the most common pattern of such growth studies. Which of the following statement is true for a child who falls beyond the average measurement for his or her age? Option A, such child is always considered as normal. Such child is always considered as normal. Such child, even though are showing normal trends as per growth in height, is considered but are not necessarily abnormal. Assumptions cannot be predicted for such a child. Okay, the question is asking true statement for the person. So which is the true statement? Option C. Okay, so what does it mean? If you remember from the growth trends topic, time, velocity, which discuss observational or measuramental approaches of growth. Okay, there only I explained that growth follows a bell-shaped curve. Be it height, weight or any such parameter which is said, it follows a bell-shaped curve. That is, it lies between the 97th percentile, or the growth maximum should lie between this. If it's less than here or more than here, okay, so it is generally considered abnormal. Means out of the normal variation. How come this normal variation was decided? Who said that this is abnormal? Like for example, अगर एक 5 years old की child supposedly says 5 feet होनी चाहिए, so who said that it's 5 should be? So this growth curves or charts were determined by
various studies which occurred over a period of time on different population groups, and based on this these kinds of graphs were made. Okay, but इसका मतलब what does it say? A child, supposedly a child 5 होनी चाहिए या 1 शुड कुछ चाहिए कि 5 से 10 फीट. अगर कोई 5 से कम आ रहा है, 4 फीट पे आ रहा है, 4.5 या 10 फीट पे आ रहा है, that does not mean that the child is abnormal. It means the trend is abnormal, but you need to keep a wait and watch, and generally it is seen that it follows or it falls into trend back. Okay, so that does not mean that the child is abnormal or it is showing abnormal trend, but it is not necessarily abnormal. You need to keep a watch on it, and slowly and steadily he might come back into it. Okay, next question. With the flush terminal plane, permanent first molars will erupt. I think I have discussed this question n number of times, okay, on YouTube sessions, on questions, everywhere. Flush terminal plane, the permanent first molars will erupt. Okay, so line में लिखा है initially या convert into. अगर initially पूछा है flushed है तो बड़ा easy है, initially erupt to end to end. Okay, it will can convert into class 1 or class 3 due to late or early mandibular growth. So initially erupt into end to end. Okay, it's a very pet or basic question, n number of times have been asked in the exam. Okay, and you all guys have the answers, and no, as I told you, I won't be waiting for your answers. This test is available freely with solutions on the app. Do attempt it. We are here, I'm here just to discuss points and clear your doubts. If you have any, just please post it. I'll be happy to answer with respect to these questions, and what more topics or what more things can be formed from these questions. Okay, sorry Bhavna, I won't be waiting for answers from any of you. If you have doubts, if you did not understand anything, just do post it and I'll clear it out. So in deep bite cases, the freeway spaces, again a direct question from NEET, which is more than one. Okay, open bite में less than normal होती है, class 1, class 2, class 3 में क्या होती है, you should know. What other questions can come from this? Freeway space. Okay, अब इसको आप प्रोस्तो का क्वेश्चन का ऑर्थो का, it's up to you. Next question. A nasal resistance is maximum during which of the following growth phase? Nasal resistance. A very good question. In a way, they have asked it quite differently. Options: pubertal, prepubertal, adolescent, or adult. Okay, so answer is pubertal. What do you mean by nasal resistance? It is directly saying that adenoids size of the adenoids. Okay, so nasal resistance or size of the adenoids is maximum during prepubertal or before the pubertal growth spurt. ये question directly is from Scammons growth curve. मतलब उसका एक घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया. Remember, the lymphoid tissue reaches 200% and then decreases. Okay, so this ये तो क्वेश्चन यहाँ हो गया. इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? अगर एडेनॉइड साइज प्रीप्यूबर्टल स्टेज पे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स द चाइल्ड विल बी ऑब्लिगेट माउथ breather during this stage. The patient will be a mouth breather during this stage.
Okay, so that means अगर एक केस बेस्ड सिनेरियो में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है अ चाइल्ड ऑफ 8 years और प्री प्यूबर्टल एज में न्यूमेरिकल एज पे दे आर गिविंग 8 years 9 years 10 years reports to your clinic, a mother reports in clinic with the chief complaint of that the patient is breathing through his mouth or he snores at night, okay, then that is absolutely normal. You don't have to give any kind of oral screen to such patient. So that is the clinical application of such cases. ओके, सो उसमें ऑप्शंस हो सकते हैं स्टार्ट विथ ओरल स्क्रीन, ओके, या ब्ला ब्ला बहुत सारे अप्लायंस, एक एंड आंसर दे दो रिफर्ड प्लान फॉर ऑर्थोडोंटिक सर्जरी, या लास्ट में वेट एंड वॉच या रीअश्योर द पेशेंट दैट दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर सच फिट. Refer to ENT, plan adenoidectomy, okay, for such child. None of them are correct. It is absolutely normal during this growth phase. Okay, so this is the clinical application of Scammons growth. Next question, a direct and very easy question which I have discussed n number of times with you. 8-year-old child reports to your clinic with a complaint of spacing between upper front two teeth, the image of which is shown below. What treatment would you advise to such patient? Start with 2/4, check for freenum, check, give Hollies, wait and watch. 8-year-old child है, स्पेसिंग है दांतों के बीच में, ओके, कंफ्यूज करने के लिए जनरली वो एक बड़ा सा फ्रीनम बना देंगे, ओके, चेक फॉर फ्रीनम अटैचमेंट लोग उसको टिक कर देंगे. एंड आई हैव टोल्ड यू n नंबर ऑफ टाइम्स, 8 9 कैनाइन इरप्टेड नहीं है, दिख रहा है परमानेंट कैनाइन नहीं आए हैं, अभी फ्रीनम का कुछ नहीं करना है, फ्रीनेक्टोमी है वो, यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच. जब जितना अगली डकलिंग से बंद हो रहा है बंद होने दो, उसके बाद वील सी whether we need to intervene or not. Not before the permanent canines erupt, you have to intervene with anything. कभी डायस्टीमा का साइज लिख देंगे कि यहाँ 4 mm 5 mm का डायस्टीमा है, इग्नोर एवरीथिंग. If you are able to see or if the age is such that the deciduous canines are present, permanent have not erupted, you have to just wait and watch. Next question, major criteria to differentiate between true and pseudo class 3 malocclusion is degree of anterior crossbite, presence of bilateral crossbite, occlusal relationship between maxillary and mandibular first molars, existence of a forward shift of mandible during closure. True and pseudo class 3. A very direct question, based question. Correct answer is existence of forward shift of mandible during closure. Okay, it can be due to any interference, okay, habitual, anything. Next question, 10-year-old patient has mandibular canines trying to erupt into a space insufficient by 2 mm. Primary second molars are large and firmly in space. First premolars are erupting. Acceptable preventing orthodontic procedure for this patient case would be 10-year-old kid है, 2 mm का डिस्क्रिपेंसी है, primary molars are, second molars are large and firmly in space, first are erupting, fours are erupting, E are firm, that means 5 either congenitally missing है, missing ही होंगे, that means the 5s are congenitally missing or they are somewhat later in development stage, we cannot come. Form है तो we are assuming that this line का मतलब है that 5s are missing. Preventing orthodontic procedure would be extracting the first premolars, placing a removable bite opener, extracting the mandible primary second molar, disking the mesial proximal of the mandible primary second. अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर 5 मिसिंग है, there is no radiographic evidence but it is saying large and firmly in space, that means extracting them won't be an option, we have to maintain.
फॉर फ्यूचर. प्लेसिंग अ रिमूवल बाय ओपनर, नो सेंस. फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्ट करने का कोई सेंस है नहीं. डिस्किंग वुड बी द अप्रोप्रिएट सिंस द डिस्क्रिपेंसी ऑफ जस्ट 2 mm present. Next question. Mother of an infant reports to a clinic with a complaint of extreme open bite. Infant है with only posterior gums in contact. Best procedure for dentist would be again a self-correcting anomaly. Okay, infant है, anterior open bite, gum pads present है. You just have to assure and wait and watch. ये सेल्फ करेक्टिंग अनोमलीज पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका मोस्टली आंसर ये होता है वेट एंड वॉच या अश्योर द पेशेंट. You don't have to intervene or do anything. Okay, क्लास नोट्स में एक समरी करके मैंने सेल्फ करेक्टिंग अनोमलीज का एक टेबल बताया है, उसको घोट के पी जाना अगर थ्योरी क्लियर नहीं. नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट, कैट्स प्रीमोलर क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, सो आई थिंक हार्डली एग्ज़ाम पासेज. मैं ये भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ. सर विच देयर इज अ क्वेश्चन, डज माय फंक्शनल ऑर्थोपेडिक वर्क एंड इज एनी स्पेसिफिक व्हिच वर्क्स ऑन डिफरेंट थ्योरी फ्रॉम अदर अप्लायंसेस. ओके, सो भावना इज आस्किंग ऑन विच ग्रोथ थ्योरी. ग्रोथ थ्योरीज जो है एज आई हैव टोल्ड यू विद टाइम हैव इवॉल्व्ड. Okay, so there is no specific growth theory on which all functional appliances work. So most common are functional matrix hypothesis, growth relativity hypothesis, जिस पे mostly twin block appliance it is said कि वो you pull it the growth occurs. Okay, Bipodoris works. And lastly the servo system theory. These three are the most common theory, or you can say जो theories पे सारे functional appliances are based. Okay, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से if you're going to ask, ये 3 theories तो आपको घोट के मतलब बिल्कुल आनी चाहिए. इसके बाद स्कॉट्स, नेजल सेप्टल कार्टिलेज थ्योरी पता होनी चाहिए एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. और ये 3 थ्योरीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आपको पता ही पता होना चाहिए. कमिंग बैक टू द कैट्स प्रीमोलर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन. ओके, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने बताया. अगर ये लाइन ऊपर की आगे है तो इट्स क्लास 2. आपको प्रीमोलर का रिलेशन नहीं देखना है कि H2H मिल रहा है तो ये होगा. H2H तो वैसे कोई होता ही नहीं वर्ड क्लासिफिकेशन में, 1 2 3 ही होता है. आपको कैट्स प्रीमोलर बोला है तो ये होना चाहिए. नाउ यू आस्किंग सर इफ आस्क्ड टू चूज एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो यू हैव टू प्रोवाइड मी द फुल क्वेश्चन भावना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क. काइंडली प्रोवाइड मी द फुल क्वेश्चन, देन आई विल बी एबल टू आंसर यू मच बेटर. I'll be okay if you write the question here in the comment section with all the 4 options. I'll be happy to answer it. Okay, if I don't know, I'll take your time and answer it on the group or in the upcoming sessions. If you have the question right now, please do post in the chat box. I'll answer it right now, but with the complete question and 4 options. Okay, so this is the cat's premolar classification. I'm not going in detail or explaining the classification again. Okay, you already know that. Next, image based question, identify the appliance shown in the image. Appliances की images में generally INI में मोस्टली एक ट्रेंड देखा गया है. ऑर्थो के केस में आई एम नॉट अवेयर अबाउट अदर सब्जेक्ट्स की एक ना एक ऐसा अप्लायंस वो दे देते हैं मे में स्पेशली जो आपने नहीं देखा होता. और आपने कैसे नहीं देखा होता है कि एग्जामिनर बनाने वाला कोई ना कोई एक आर्टिकल या कहीं एक नया अभी रिसेंट अप्रैल में कोई एक आर्टिकल में पब्लिश हो जाता है एंड दे पोस्ट इट एज अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. एंड उसके बाद वो पैनिक मच जाता है कि ये कौन सा अप्लायंस है, ये तो हमने देखा ही नहीं, सर ने बताया नहीं. ना जब भी ऐसा अप्लायंस का इमेज आए जो आपने नहीं देखा है, सपोजली अगर मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस अप्लायंस बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लास, बट एनीवे ठंडे दिमाग से चारों ऑप्शन को ज़रूर पढ़ लेना.
अगर एक अप्लायंस ऐसा है जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट बाकी 3 ऑप्शंस ज़रूर, आई कैन गारंटी यू विद 100% विल बी द वन जिसकी इमेजेस आपने 100% देखी होगी। आई कैन गारंटी यू दैट। कमिंग टू द ऑप्शन, टीरेक्स की इमेज आपने क्लास में देखी है, पेंडुलम की इमेज आपने क्लास में देखी है, फर्स्ट क्लास की आपने देखी है, कैरियर मोशन की मैंने शायद क्लास में नहीं बट एक टेस्ट में या सेशंस में ज़रूर दिखाई है। सो दिस इज अ कैरियर मोशन डिस्टलाइजिंग अप्लायंस इमेज। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बाउंसर टाइप का, फर्स्ट एक पॉइंट ध्यान रखना, वो बाउंसर जितने लोग दे रहे हैं 20, 25, 30, 40, 50,000 हाउस नंबर ऑफ एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे रहे हैं उन सबके लिए हो, चाहे उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया हो चाहे 4 साल ड्रॉप करके दिया हो, it will be a bouncer for everyone because that bouncer means that it's something new which has come recently in past 1 or 2 months in a newer kind of medical science is continuously evolving, publishing newer articles every day. Right now I'm spoken for you for exactly 42 minutes. By this time I over my session 2-3 articles or research would have been published. Okay, so you cannot, or no one in this world can keep a tab on them. So it will be a bouncer for everyone except the person who has put that question in the exam. And right now our job is not to criticize the examiner, our job is to correctly answer and get 4+4 and move ahead. So your focus right now should be on that. Okay, moving ahead. Choose the incorrect or wrong statement. Retained deciduous incisors can cause its permanent successor to erupt lingually. Okay, possible. In mandible, if retained deciduous incisor is extracted, the tongue pressure brings the erupting permanent incisor to its correct position if sufficient space is available. If upper incisor are fully erupted into lingual occlusion with a deep vertical overbite, a wooden tongue depression can be used to correct that. Patient should bite on the wooden blade sloping downward at 60 degrees to the occlusion plane. So incorrect statement will be option C. By fully erupted. This is a direct question for correction of developing anterior crossbite. Fully erupted and developing crossbite. I have discussed this n number of times. Wooden tongue depressor, Catalan appliance are not used for fully erupted incisors. उसके लिए आपको 2x4 अप्लायंस या फिक्स्ड अप्लायंस थेरेपी ही करनी पड़ेगी. यू कैनॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ मैकेनिक्स. Okay, so this is the incorrect statement. Again, an image based question. The reason why I put up this question is because it's a very common image which comes, I think, in every alternate exam also, be it INI, NEET or sometimes both as well. In a year एक ना एक बार तो आ ही जाती है. 3 एग्ज़ाम होते हैं MPG के, उसमें एक ना एक में तो ये पक्का इमेज आ जाती है नाइटा एक्सपेंडर की. Okay, so this image again theoretical we have discussed in the class, you all know. This is the image of a newer kind fan type of expander used in anterior expansion, and lastly is a butterfly expander. Vilcodontics, okay, is a term used in orthodontics to describe. अब इसको why I have put up this question, generally patient लोग बच्चे इसको Wilkinson's extraction से confuse करते हैं. Okay, someone I just had a doubt because I read at a place where it was malfunction works mostly on function, but sir, condyle growth even strongly even follows condyle bulb analogy also. Yes, you are right. That's what I'm telling you, Bhavna. Appliances जो इवॉल्व हुए, पहले मेडिकल साइंस हमेशा इवॉल्व होती है. यू डू अ एक्सपेरिमेंट एंड यू फाइंड इट्स करेक्ट. ओ ये कैसे हुआ, देन यू रेट्रोस्पेक्टिवली सर्च कि हाउ डिड इट हैपन. फिन ब्लॉक भी जब इवॉल्व हुआ, the scientist or the orthodontist William Clark, what he did was he did it on his own daughter. He placed 2 plates. She was here for a summer break. Okay, the person lives in Scotland. His daughter came for a summer break. He just gave her an appliance. Okay,
and he observed that after some time the correction occurred very easily, and it was quite quick as compared to the appliances like activator which was present at that time. So then he retrospectively searched, and so what I'm trying to say is मेडिकल साइंस में मोस्टली एवोल्यूशन ऐसे ही होता है, यू डू समथिंग एंड देन यू रेट्रोस्पेक्टिवली सर्च टू प्रूव हाउ डिड इट हैपन. ओके, सो कोई भी अप्लायंस एक सिंगल बेस्ड थ्योरी पे नहीं होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थ्योरीज. Likewise, I think I have discussed functional matrix पे not only there is a removable appliances, there is a fixed appliance also known as Damon appliance therapy, that is fixed bracket wire therapy, which is based on expansion of the arches, is also there. Okay, so there is not a single theory which can explain any appliance, it's a combination of various theories, and these evolved retrospectively when it was seen that ये correction हो गया. Okay, let's go back and see how did it happen, what changes were happened at the organ or condyle level. Okay, so coming back to the question, Wilcodontics. So the reason I put it up here is students generally confuse it with Wilkinson's extraction. So Wilkinson's extraction was an earlier protocol which was followed at 6 to 7 years of age, in which all first molars were extracted. Okay, at that time it was thought that by extracting the permanent first molars, जैसे ही वो erupt करते, it was seen that the third molars would take up that space and will prevent their impaction, and at the same time it was thought that third molars were responsible for crowding of the incisor teeth as well. To prevent that, it was advocated that first molars को जैसे erupt हो extract कर दो, and that theory or that thing was known as Wilkinson's extraction. Okay, this thing is no longer advocated now. Okay, coming back to the question is on Wilcodontics. So what is Wilcodontics? Wilkins was a orthodontist who studied and did lot of research on accelerated orthodontics, that is to accelerate the orthodontic treatment. Generally it is observed that orthodontic treatment takes how much, you have seen 1 year, 1.5 years. Okay, so he gave us certain appliances, devices. All of these images are available under the image section on your app, kindly go through them. Okay, so this is the AOO for accelerated osteogenic orthodontics. Next, following orthodontic appliances shown. अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ आपको ये ऐसा इलास्टिक सा दिख गया, मतलब एक्टिव फोर्स लग रहा है, इट्स एक्टिव टाई बैक, इट इज यूज्ड फॉर स्पेस क्लोजर. Yes, accelerated orthodontics by corticotomy. There are various other methods as like laser, ultrasound, okay, PRP images. Please laser और ultrasound की ज़रूर देख लेना. लाइपस, लाइट थेरेपी, बायोलक्स डिवाइस, सबकी इमेजेस मैंने डाल रखी है. बहुत ही करंट हॉट रिसर्च टॉपिक है AIIMS एग्जाम के लिए स्पेशली. जस्ट गो थ्रू दोज इमेजेस. ओके, AIIMS में एक्सेलरेटेड ऑर्थोडोंटिक्स पे क्वेश्चन आना बहुत ही कॉमन है. मोस्ट ऑफ द थीसिस जो है ना उसी पे चल रही होती है एम्स में. ठीक है, सो इट्स अ इमेज ऑफ एक्टिव टाई बैक. पैसिव में अगेन देयर वोंट बी एनी इलास्टिक, लेज बैक, फिगर ऑफ 8 लाइगेशन, ऑल यू नो. उसके एक्सप्लेनेशन इमेजेस मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिए. ओके, सिमिलरली हाँ, इन इमेजेस के साथ साथ बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कॉमन होते हैं स्पेस क्लोजर के लिए, सेगमेंटल मैकेनिक्स एंड सेक्शनल मैकेनिक्स, गो थ्रू इट, हाउ इट्स डन, what are the loops which are used, images again all are there on that. कोई ना मिले इमेजेस नहीं है, मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करो, मैं फिर डाल दूंगा चेक करके अगर नहीं है तो, या मैं आपको हेल्प कर दूंगा. राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू बी अ जेंटलमैन और समथिंग. राइट नाउ इट्स द टाइम टू गेट वॉट एवर यू डोंट हैव एंड क्लियर योर एग्जाम एंड गेट डन विद इट. तो कोई हेजिटेशन मत करना कि इमेज सर नहीं है उसमें, प्लीज़ आपने बोला था भेज दो, मैं पर्सनल व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट प्लीज़ पूछ लेना. बाद में एग्ज़ाम के मत कहना कि सर ये थी नहीं इसलिए हमने नहीं पढ़ा.
देन मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं सब दे देता हूँ, अगर ऐप पे अपलोड नहीं है या कुछ लैगिंग है तो आई कैन ओनली चेक इफ यू गो टाइम पे. नेक्स्ट, म्यू अप्लायंस इज यूज इन द केसेस ऑफ, ये आपका एक SR एग्जाम का क्वेश्चन है, पुट इट अप थिंकिंग इट माइट कम. ओके, सो म्यू स्टैंड्स फॉर मल्टी लूप एजवाइज आर्चवायर अप्लायंस. ओके, इट इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ ओपन बाइट. ओके, सो दिस इज द इमेज. ओके, सो ये जैसे जनरली होता है ना, एक बाउंसर डालना होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन था, मैंने डाल दिया. ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, इमेज ध्यान रख लेना, ऐसे लूप्स बने होंगे और क्या पर्पस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना इसके बारे में. लूप्स कितने डायमेंशन के, क्या हाइट पर, कुछ नहीं जानना आपको. इलास्टिक कैसे यूज़ कर रहे हैं वो सब, वेन एवर इफ यू गाइज परस्यू और PG इन ऑर्थोडोंटिक्स देन यू कैन स्टडी. अगेन कैट लेंस अप्लायंस, वेरी वेरी हॉट टॉपिक. कैट लेंस 100% एग्जाम में कैट लेंस या एंटीरियर क्रॉस बाइट करेक्शन पे क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो. नीट आईने दोनों, किस फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में किस लिए यूज होता है, हाउ टू करेक्ट एंटीरियर क्रॉस बाइट, उसी फॉर्म में आ सकता है. नॉट गिवन कैट लेंस माइट की इमेज, ये यूज फॉर करेक्शन ऑफ डेवलपिंग एंटीरियर क्रॉस बाइट. अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो व्हाट विल हैपन, पोस्टीरियर बाइट में सेपरेशन होगा, कॉजेज ओवर इरप्शन ऑफ पोस्टीरियर टीथ. अगेन डिस्कस्ड इन द क्लास. एंगुलेशन नॉट टू बी यूज, कितने टाइम, सब कुछ. बाकी सबकी इमेजेस भी अगेन आर प्रेजेंट इन योर लेक्चर्स एंड क्लास नोट्स. Two statements which are correct, which is false. First statement, tooth movement when two forces equal in magnitude, opposite direction, same line applied, known as couple. हाँ ठीक है, couple forces will produce pure rotation of tooth. Okay, tooth movement two forces equal in opposite direction, same. Okay, maybe I also got stuck. Same line, same line में कपल फोर्सेस कभी नहीं होती. दीज आर नॉन कोलिनियर फोर्सेस. सो एक पॉइंट के बेसिस पे अगर आपने बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट कर दिया होता, यू वुड हैव लॉस्ट -1. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स. कपल फोर्सेस बाय स्टेटमेंट ऐसी जो आती है उसको ध्यान से पढ़ना, आंसर उसी में छुपा है. दीज आर डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस. जिस मिले क्लास में अगर मैं डेफिनेशंस आपको बता देता, मस्ट हैव साउंड बोरिंग, बट नीड ऑफ द आर टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस होता है, पढ़ना पड़ता है. कैमोफ्लैज ट्रीटमेंट इज बेस्ट अवॉइडेड इन माइल्ड टू मॉडरेट क्लास स्केलेटल क्लास 2, सीवियर स्केलेटल क्लास 3, गुड वर्टिकल प्रोपोर्शंस ऑफ द फेस, पेशेंट्स बियॉन्ड द एज फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ मॉडिफिकेशन. So what is camouflage? Camouflage means to hide something. कहाँ छुपाना चाहोगे आप, किस चीज़ को, उसी चीज़ को छुपाना चाहोगे which you cannot correct it very easily. Okay, so question is asking best avoided, yeah, means in which cases you won't go for camouflage treatment. Mild to moderate skeletal class 2, okay, you can go. Severe skeletal class 3 you cannot go. Good vertical proportion you can go. Beyond the age for successful growth you can go. So severe case में you won't go. Severe case में you have to go for orthodontic surgery if it's a adult, or functional appliance therapy like face mask or something like that in class 3 scale, face mask or head care if it's in the growth phase. Patient undergoing orthodontic treatment for the correction of malocclusion shown in the image will require what type of retention? Okay, so इसमें क्या है, there are the canines are buccally erupted. Okay, the correction means they will come down. Okay, once they come down, what kind of retention you will plan? Okay, so answer is visible, no retention will be required. Retention relapse में Rijul's theorems, उसका न्यूमोनिक आपको पता है. नो रिटेंशन, मॉडरेट एंड परमानेंट रिटेंशन. Moderate वाला okay, not much required for MCQ because point of view. What is required is no retention and maximum retention required. Maximum means permanent retention required.
वो दो पॉइंट्स में जितने भी एग्जाम्पल है बिल्कुल घोट के पी जाना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिक्वायर और नॉट रिक्वायर, ऐसे करके मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो रिटेंशन रिलैप्स में एंड हाँ, रिटेंशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अप्लाइंसेस की इमेजेस। क्लास 2 क्लास 3 केसेस में, एक्सट्रैक्शन केसेस में कौन सा बेक्स रिटेनर्स, फिक्स रिटेनर किसने कब दिया, क्या सब कुछ नोट्स में। रैप अराउंड रिटेनर, एक्टिव रिटेनर, सबकी इमेजेस एंड ऑल आई हैव शोन इट यू। ओके, नोट्स लेक्चर्स में से ज़रूर देख लेना इमेजेस। सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट done tightly may lead to the development of class 1, class 2, class 3, class 4. There is no class 4 malocclusion first of all. That's eliminated. क्लास 1 तो डेवलप हो नहीं सकता, बचा क्लास 2 क्लास 3। क्लास 2 मीन्स मैंडिबल पीछे है, सर्जिकल रिपेयर पैलेट का हो रहा है मैक्सिला में, तो क्लास 2 भी नहीं हो सकता, बचा क्लास 3। अगर किसी को ना भी पता हो, कॉमन सेंस से भी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन अ क्लास, अर्ली रिपेयर, एजेस, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। 3 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दीज आर द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक। वाई? बिकॉज ये सबसे लास्ट में आते हैं। ओके, सो स्टूडेंट जनरली हैव अ टेंडेंसी टू इग्नोर देम एंड नॉट स्टडी अबाउट इट, या उसको फट करके ख़त्म किया। और 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक इस समय बहुत ही करंट हॉट टॉपिक है। सो इसको इग्नोर नहीं करना। वैसे अप्लाइंसेस इमेजेस सब दिखाया हुआ है, क्लासिफिकेशन, एपनिया, हाइपरपनिया, इंडेक्स, स्कोर सब पता होना चाहिए। पॉलीसोमनोग्राफी, इमेजेस, मैंडिबुलर टाइट्रेबल अप्लाइंसेस, एडवांसमेंट्स, ट्रीटमेंट मोडालिटी, सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी। इट्स अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम सर्जरी एंड ऑर्थोडोंटिक्स। जनरली यू गाइज आर एबल टू आंसर। ऑर्थोडोंटिक पॉइंट में जो जो इंपॉर्टेंट थे आई हैव डन। लास्टली आता है क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। इसमें सबसे ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग ऑफ सर्जरीज, जिसका मैंने एक टेबल फॉर्म में आपको दे रखा है, किस टाइम पे क्लेफ्ट लिप पैलेट सर्जरी करनी है, क्या सर्जरी कौन सी करनी है, क्या करनी है, वो और ओरल सर्जरी में मैम ने आपको बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग टाइम, किस सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्ट एंड ऑल का टाइम, करेक्शन का टाइमिंग, प्राइमरी डेंटेशन स्टेज पे आए, इन्फेंट आए, क्या करना है, लिप टेपिंग एंड ऑल, सब कुछ आपके उसमें। आई एम जस्ट समराइजिंग और रिवाइजिंग कि अगर इफ़ यू हैड फॉरगॉटन, अभी क्लास ख़त्म होने के बाद जस्ट गो थ्रू दोज पेजेस। टाइमिंग ऑफ सर्जरी, किस टाइम पे क्या इंटरवेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख के ले लो, एक ना एक दो क्वेश्चन क्लेफ्ट लिप से ज़रूर आता है और ओ एस से पक्का आता है। ओ जी एस इज़ अ ओवरलैपिंग टॉपिक सर्जरी और हमारे ऑर्थो में, तो यू गाइज आर एबल टू आंसर। और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एंड ओ एस से इग्नोर टॉपिक है, क्या क्या आ सकता है, अगेन अगेन हाईलाइटिंग, इसको इग्नोर मत करना। ओके, ज़रूर डू गो थ्रू इट, ओके, फॉर योर एग्जाम। So I think that's the last question. Anyone has any doubts, please do ask. I'll wait for a minute or two before closing the session. You guys have my number. WhatsApp करो, कुछ करो, बेशरम होके करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स योर ड्यूटी, हक बनता है आंसर निकलवाना है। तो मैं हाँ मतलब मैं ऑर्थो का ही कर पाऊँगा, बाकी सबके तो नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ अपनी रैंक निकालनी है तो करना पड़ेगा। क्या सोचेंगे दुनिया, क्या सोचेगी, क्या होगा, कुछ नहीं भूल जाओ। लास्ट मंथ है गया है, इस टाइम निकाल ले गया, उसके बाद सब रैंक ही सोचेंगे और कोई कुछ नहीं सोचने वाला। कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर, प्रोवाइडेड अ क्वेश्चन इज़ प्रोवाइडेड, आई विल आंसर दोज डाउट्स।
कहाँ से पूछा, क्या पूछा, I don't ask it. Question दो, I'll answer. Any kind of doubt, please do not hesitate. कहाँ का स्टूडेंट हो, क्यों हो, I don't care. Get your answer and clear exam. BiPAP is used in O, and we should need my function to use along, or they just play adjunctive role. Okay, so in OSA I have given you a apnea, sleep apnea score by which we obtain apnea hypopnea score, okay, which you get from polysomnography, जिसके basis पे you diagnose the case at mild, moderate or severe. Okay, जो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्या है? रेडियोग्राफ्स, लैटरल सेफ. इफ यू रिमेंबर, लैटरल सेफ में आप क्या देखोगे? मैकनमारा एनालिसिस. अगर मैंडिबल पीछे प्रेजेंट है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ओके, देन ओनली यू विल गो विथ माई फंक्शनल अप्लाइंसेस. माई फंक्शनल अप्लाइंसेस का रोल क्या है? मैंडिबल को आगे लाना. अगर मैंडिबल पीछे है ही नहीं एयर को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, देयर इज सम अदर प्रॉब्लम लाइक obesity is there, lifestyle modification is required, anything like that, then they won't play any role, be it adjunctive or anything. CPAP, BiPAP is used in those cases जिनमें moderate to severe है, मतलब patient is not able to sleep as well lying down, he has to sit and then sleep. So then in that case the obstruction is such severe that you have to go for CPAP, BiPAP things. वो आपको इस स्कोर के बेसिस पे ही पता चलेगा. moderate to severe cases या ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी प्लान करनी है, अगेन अप्लाइंसेस वर्क ऑन ओनली दोज केसेस जो सर्जरी के लिए इंडिकेटेड है, बट दे आर रिलक्टेंट कि हम सर्जरी नहीं कराएंगे. सजेस्ट समथिंग, देन यू कैन गो फॉर अप्लाइंस क्यों. यू कैन सजेस्ट देम अप्लाइंसेस पहन के रात को सो जाओ, मैंडिबल विल बी फॉरवर्ड पोजीशन, यू विल बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. बट डेफिनेट ट्रीटमेंट विल बी अ सर्जरी फॉर सच पेशेंट्स. CPAP for moderate to severe cases in which obstruction is due to some other reason, not because of mandibular protrusion. But these all will be determined based on this index. Anything else? Any other doubt? So I wish you all the very best. I think we'll meet again for the revision session, but I don't think it will be on the YouTube. It will be on the app based platform only once this Predictor series is done. Okay, rest anything, any doubt, please do not hesitate. Again I'm repeating and asking, and we will be happy to answer. Okay, so I'll close the session now. Okay, so happy studying and all the best, very best for your exams. Do well.